Today let's start with chapter number 2, that is need healthy food. So we all need food. All living organisms need food to live. They eat food every day. The food is very important for our body because it gives us energy to do work, helps us to grow, repairs body parts, helps to fight disease. And it keeps us strong and healthy. हमें कैसा रखता है? Strong रखता है, healthy रखता है. Let's study about the sources of food. We have two sources. We have plants and animals. Right? If we talk about plants, we get fruits, vegetable from the plants. Animals, we get egg, milk products and meat. Right? Next is different kinds of food. We have energy-giving food, bodybuilding food and protective food. So let's talk about some nutrients, right? Like carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. Right? First is carbohydrates. What they gives us? They provide us heat and energy, and what we call them energy giving food. Like we have sweet potato, honey, beetroot, right? And cereals. Next we have fats. They are body building food, right? Fats, they are also energy giving food. ये हमें ज़्यादा energy देते हैं as compared to other food items, right? They are rich in fat like butter, ghee, walnut, almond. ये सब क्या हो गए आपके fats. Now protein, they helps in body building और ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं. हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. लाइक वी हैव मीट, चिकन, फिश, एग, बीन्स, राइट? दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड. नाउ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, दे फाइट अगेंस्ट डिजीज, राइट? इनको हम प्रोडक्टिव फूड कहते हैं. जैसे आपके मिल्क आ गया, फ्रेश वेजिटेबल्स, चीज, फिश, एग्स. एंड कैल्शियम हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. आयरन हमारे ब्लड को रेड बनाता है. नेक्स्ट फाइबर, इट इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी बट वी नीड इट टू थ्रो द वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ दीज instinct. Fibers are the part of all plants food, especially like stems and leaves. Water does not contain any nutrient, still it is very important for our body because it helps in digestion of food, throwing out waste from the body, maintain proper body temperature and body cells to function properly. Next is balanced diet. What is balanced diet? It is a diet that contains proper amount of nutrients. इसमें आपके carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals सब होते हैं. राइट? द टोटल फूड वी ईट इन डेली इन 24 आवर्स, वो डाइट होती है और इसमें सारे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक राइट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं विद इनफ फाइबर और वाटर को हम बैलेंस डाइट कहते हैं. ये नेसेसरी होती है फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो डिपेंड करता है एज पे, नेचर ऑफ द वर्क ऑफ अ पर्सन. ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन रिच फूड एंड द हार्ड वर्किंग पीपल व्हाट दे नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. बेबीज, ओल्ड एंड सिक पर्सन, they should be given milk and vitamin rich food. Now proper handling of food, हमें proper handling करनी पड़ती है. What? Select food carefully, throw away spoiled food. Next is pick the food carefully. ठीक है, आप grains को carefully wash fruits and vegetables जिससे आप उसके dust remove कर सको. Peel the fruits and vegetable after washing. Wash your hands properly before cooking. Use utensils for cooking. Do not cover. भाई जहाँ पे खाना रखा उसके सामने आपको ना छींकना है ना खांसना है. Always keep the food covered. और आपको food को क्या रखना है? Covered रखना है. To keep nutrients safe while cooking. So wash the vegetable before cutting them. Washing the vegetables after cutting. What they lose is their nutrients in water and they are wasted. Right? If you soak pulses in water for hour, आपने देखा वो फूल जाते हैं. So cook them in the same water. Most of their mineral and other nutrients have gone. Do not overcook the food for a long time. The vitamins और other nutrients को destroy. Avoid frying and deep frying of food. इससे क्या होता है? Vitamins destroy हो जाते हैं. Now storage of food. We have cereals and pulses. They should be proper dry. They contain the container of the storing them should be properly washed and dried. The container for storing them should be airtight to check the entry of germs. Put lumps of the salt or dry meals so that insect do not attack them. Wheat, flour, आटा, या refined flour हो गया, porridge हो गया, दलिया हो गया, species हो गई. Dry them properly, store them in clean and airtight container. Do not leave the container open for a long time. Close the lid tightly and quickly after use. Ghee, they should be stored in airtight container. Never leave the container open. Next is cheese, that is paneer. Wash the paneer and keep in cold water. It should be kept in the fridge. If the paneer is cut into pieces and lightly fried and then kept it in the fridge, it lasts much longer. Now eggs, never wash the egg before storing. Store eggs with pointed ends downward. Store them in a fridge or in a cool or airy place. If we talk about fruits and vegetables, remove them from the polythenes immediately. Store fruits in the fridge.
आपको रैप करना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल को मसलिन क्लोथ्स में। पोटैटोज, ऑनियंस, अनियन एंड गार्लिक, इनको आपको वायर बास्केट में स्टोर करना है, ठीक है। इट शुड बी ओपन, ड्राई एंड एयरी, जिससे आप क्या प्रिवेंट कर सकते हो, स्पॉइलेज। नाउ मिल्क, कर्ड एंड क्रीम, बॉइल्ड मिल्क एंड कूल टू किल द जर्म्स if any, right? Never mix old and fresh milk. Store curd and cream in the fridge, right? Now meat, fish and chicken, store meat, fish and chicken in the freezer. Do not buy more than needed. Put some salt on fish. आपको salt लगेगा। Bread, keep it in the airtight bread box so it remains fresh. Try to buy as much as you need. आपको जितनी need है आप उतना ही buy करें, right? Now avoiding wastage. Take as much as food as you need. Do not leave the food in a plate. Do not overeat. Never leave the food uncovered. नहीं आपको food uncovered रखना है। Insects and rat will eat up. Store the food stuffs properly. आपको जो food stuff है उनको properly store करें, right? This is all in this chapter. Hope you understood. Now we will do the exercise. Now take the correct option. All living organisms need food for live. A. Which of the following food items does not contain carbohydrate? That is butter. Which of these does not belong to milk? Butter. Main source of food are plants and animals. Boil milk and cool it to kill germs. Now fill in the blanks. Now never mix old and new milk. Our diet must be, जो हमारी डाइट होती है वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। Next is dash should be maintained while preparing food. आपको क्या मेंटेन करना है, cleanliness. Next is put dash it is stored, put some store fruits in the, आपको fruits को कहाँ स्टोर करना है, रेफ्रिजरेटर। Next is give the category of the following. Food grains, pulses and species, ये plant category से। Milk, meat and animal। Growth, protection, good health। Oil, ghee, butter, fats, potato, honey, wheat, carbohydrate, fish, beans, milk, protein, fruits, vegetable, meat, आपको फंक्शंस बताने हैं, 2 सोर्सेज बताने हैं। नेक्स्ट इज हाउ यू वुड स्टोर द फॉलोइंग फूड स्टफ, आप सीरियल पल्सेस को कैसे स्टोर करेंगे आपको बताना है। नाउ राइट टू मेन सोर्स ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, नेम देम। व्हाई डू वी नीड वाटर एंड व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड डाइट एंड हाउ वुड यू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, कैसे आप वेस्टेज ऑफ फूड को अवॉइड कर सकते, राइट? दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर, होप यू अंडरस्टूड। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।